Good afternoon, welcome to the stream। क्या हाल चाल है भाई? आई होप यू आर डूइंग वेल। सॉरी आज थोड़ा लेट हो गया भाई, थोड़ा अपना सेटअप साफ सफाई थोड़ा जरूरी है ना, तो साफ सफाई कर रहा था मैं। तो उसी साफ सफाई में थोड़ी सी लेट हो गई, ठीक है। वेल वेलकम बैक टू द क्रू मोटरफेस्ट स्ट्रीम। मैं ट्राई कर रहा हूँ भाई जल्द से जल्द भाई प्लेलिस्ट खत्म कर लूँ, ताकि भाई अपन नेक्स्ट गेम पे जंप कर पाए, ठीक है ना। लाइक एक टाइम पे मैं 15-20 गेम स्टार्ट कर दूँ और अभी तक एक भी नहीं गेम खत्म करा, तो अच्छा नहीं लगता ना वैसा। तो जितना जल्दी हो सकता है, जितने प्लेलिस्ट है जिक्र में फिनिश करते हैं, उसके बाद भाई नेक्स्ट गेम में जंप इन करेंगे। बाकी अपने पे अभी 2-3 गेम्स है खेलने के लिए, ठीक है। फिर जब गेम सारे खत्म हो जाएंगे और जब पर अपने पास कोई गेम्स खेलने के लिए बचेंगे नहीं, तब हम ये गेम्स दोबारा खेलेंगे, साइड क्वेस्ट वगैरह करेंगे और बाकी जितने भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है गेम में वो सब करेंगे, ठीक है ना। बाकी अपनी नई नई परंपरा स्टार्ट करी थी हमने सेकंड लास्ट स्ट्रीम में, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं, जो कि है भाई स्टीम पे जो भी गेम्स फ्री या डिस्काउंट में चल रहे हैं वो बताना, जो कि मैं बताऊंगा आज। तो आज भाई मेज लेनिया वापस से फ्री चल रही है, 100% डिस्काउंट पे, ठीक है ना। तो क्लेम कर लेना जाके। डेटा फोर्स फ्री है, वेरविन मिस अगर नहीं खेला तो वो भी फ्री चल रही है अभी, और वो फ्री ही रहेगी। ग्रीन हेल भी 99 रुपीज़ की चल रही है अभी, 90% डिस्काउंट में। हेल ड्राइवर्स भी 25% डिस्काउंट में चल रहा है 1874 में। डेड बाय डेलाइट अभी तक है डिस्काउंट में, तो जल्दी से जल्दी ग्रैब कर लो, बहुत ही अच्छा गेम है। अगर तुम्हें अपने फ्रेंड्स के साथ कोई हॉरर गेम खेलना है, हॉरर एस्केप गेम खेलना है, तो ये भी खेल सकते हो। 463 का चल रहा है अभी। NBA अगर किसी को बास्केटबॉल वगैरह पसंद है तो वो भी डिस्काउंट में चल रहा है, 67% डिस्काउंट में है, 1320 रुपीज़ में। रस्ट भी डिस्काउंट में चल रहा है, सर्वाइवल गेम है, बहुत अच्छा गेम है, 50% डिस्काउंट में है, 850 रुपीज़ में। यैप यैप भी एक गेम अच्छा चल रहा है डिस्काउंट में, आई गेस। ये गेम का मुझे लेकिन पता नहीं है, लेकिन देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, तो ये भी कंसिडर कर सकते हो बाई करने के लिए। और रिस्क ऑफ द रेन टू भी थोड़ा अगर यूनिक गेम ट्राई करना है। थार कैसी? थार तो मस्त है यार, थार तो मस्त है, देखी मैंने, मैं भी बनूंगा। स्प्लिट फिक्शन भी अभी तक डिस्काउंट में है, तो जल्दी से जल्दी उसको भी बाई कर लो, 25 डिस्काउंट है, 25% में। क्रेन भी एक बहुत ही अच्छा गेम है, लाइक माउंटेन क्लाइंबिंग गेम है, लाइक तो ट्रैकिंग गेम है, ठीक है ना। ट्रैक करते हो, जिनको पसंद है वो कर सकते हो डाउनलोड। 10% डिस्काउंट में है, 1170 रुपीज़ का। रेडी और नॉट भी डिस्काउंट में चल रहा है, बहुत अच्छा गेम है। 40% डिस्काउंट में 1200 रुपीज़ का चल रहा है अभी, ठीक है ना। हॉगवर्ट्स लेगेसी अभी भी डिस्काउंट में है, तो भाई ये डिस्काउंट भाई बहुत अच्छा है इस गेम में, ठीक है ना। और दोस्त जिन्होंने नहीं बाय किया, लाइक बाय नहीं किया मतलब जब फ्री मिल रहा था ना तब, एपिक स्टोर पे, ठीक है। सो वो भी जल्द से जल्द जाके भाई अभी बाय कर लो, 85% का डिस्काउंट है। मैंने थोड़ी स्ट्रीम्स खेल रखी है, अगर तुम्हें वो भी देखना है कि कैसे दिखती है गेम, खरीदने से पहले तुम मेरी स्ट्रीम चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये भी 1600 की चल रही है अभी। बॉर्डरलैंड्स 4 भी चल रही है डिस्काउंट में, 30% डिस्काउंट में, 2800 रुपीज़ का। डेज़ी भी बहुत अच्छा गेम है, वो भी 750 रुपीज़ का चल रहा है। ब्लैक ऑप्स भी डिस्काउंट में चल रहा है, उससे उतना डिस्काउंट नहीं है लेकिन अच्छा गेम है, 3900 का डिस्काउंट में चल रहा है। और माफिया द ओल्ड कंट्री भी डिस्काउंट में है, 20% डिस्काउंट में। माफिया डेफिनेटिव एडिशन डिस्काउंट में है, 329 का चल रहा है, बहुत अच्छा ऑफर है, तो जल्दी से जाके ग्रैब कर लो। अवे आउट भाई, नो डाउट, अगर ये नहीं खेला तो कुछ नहीं खेला, ठीक है। ये भी बाय कर लो, 149 रुपीज़ का चल रहा है। बाजार भी डिस्काउंट में चल रहा है, बाजार तो ऐसे कोई इतना अच्छा लग नहीं रहा है। माफिया 2 भी डेफिनेटिव एडिशन डिस्काउंट भी चल रहा है, 80% डिस्काउंट में, 340 रुपीज़ का, तो वो भी जाके ग्रैब कर लो, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत सारे बता दिए, ठीक है ना। तो जिनको जिनको गेम्स खेलने हैं, जिनको जिनको डिस्काउंट में गेम्स खेलने हैं, खरीदने हैं, तो ओरिजिनल गेम्स खेलना है जिनको, वो ये सारे गेम जो मैंने अभी सजेस्ट किए हैं उनको कंसीडर कर सकते हो तुम लोग, ठीक है ना। बाकी
बैक टू द क्रू और ट्राई करते हैं भाई आज जितना ज़्यादा प्लेलिस्ट कंप्लीट कर सकते हैं अपन कंप्लीट करेंगे। गेम की आवाज़ सही आ रही है। आनी तो चाहिए वैसे गेम की सही आवाज़, लेकिन तो ज़रा कर सकते हैं अपन ट्राई कंप्लीट करेंगे। ओके सही आ रही है। ठीक है फिर चलो भाई कंटिन्यू करते हैं। ओके आज आरू भाई पहले से ही है अपने स्ट्रीम के स्टार्टिंग में और उन्होंने भाई थार बनाई है बहुत। हेलो जी लो कर लो बात। गेम क्रैश। गेम खेलना स्टार्ट नहीं किया कि गेम क्रैश हो गई डैम। चलो कोई नहीं, जब तक गेम स्टार्ट होता है तब तक मैं कम्युनिटी पोस्ट में भाई अपना सेटअप डाल देता हूँ, ठीक है। एकदम साफ किया मैंने आज कम्युनिटी पोस्ट। और हाँ भाई 200 सब्सक्राइबर हो गए थे लास्ट स्ट्रीम में, तो भाई उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आई अप्रिशिएट दैट वेरी मच। अपन पता नहीं यार इतना बड़ा फोटो आएगा कि नहीं, पर देखते हैं। थोड़ी एडिट भी करी है मैंने, फोटो को दिख तो रही है अच्छे से, पता नहीं अब। मतलब ठीक है दिख रही है अच्छे से। ओ डैम भाई नाइस। ओके ओके ठीक है, अच्छी दिख रही है फोटो। क्लीन क्या डालूं, क्लीन। कीप योर सेटअप। सेटअप लिखूं क्या, या फिर कुछ और लिखूं तब तक के लिए। हम्म इमोजी भी डाल देते हैं थोड़ा सा। ब्रश। ब्रश में नाम पे भाई ब्रश आ रहा है। चलो ब्रश ही डाल देते हैं, वैसे थोड़ा सा ब्रश का भी यूज किया था डस्ट हटाने के लिए तो। ओके भाई अपना कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया, लेकिन यार क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही है इसमें। ए देख के बताना यार, तुम्हारे में भी क्वालिटी ऐसी आ रही है क्या मेरे में जैसी आ रही है? क्योंकि लाइक थोड़ी देर बाद सही हो जाता है वो, लेकिन अभी उतना अच्छा दिख नहीं रहा है। बड़ा ब्लर दिख रहा है ना। ओके गेम ऑन हो रहा है। मेरे को तुम्हारे चैट्स नहीं दिख रहे, रुको। 1K पर सुबह थे भाई ना। 1K पे भाई फेस रिवील कर दूंगा मैं। न्यू गेम कौन सा गेम खेलूं बता। नेक्स्ट स्ट्रीम में खेलूंगा न्यू गेम। आज तो भाई द क्रू में कह रहा हूँ कि भाई जल्द से जल्द जितना ज्यादा जल्दी कंप्लीट कर सको उतना ज्यादा जल्दी कंप्लीट करेंगे। एचडी लग रहा है, एचडी लग रहा है यार, मतलब मेरे में ही खराब दिख रहा है वो गेम। मैं अकाउंट स्विच करके देखता हूँ, ठीक है। अकाउंट स्विच करके देखूंगा तो वैसा लगेगा। पर अगर भाई थोड़ी मेरी अगर आज बात ऐसे अजीब सी लग रही होगी ना, तो मेरे मुंह में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो लाइक जीभ में थोड़े छाले हो रखे हैं, इसलिए मैं थोड़ा अजीब सा बात Let's कर get रहा back हूँ। into action.
थोड़ा सा मतलब अलग सा लग रहा है, लेकिन ठीक है। ओके। वेलकम टू द स्ट्रीम भाई, जो नए हैं भाई, सब्सक्राइब टू माय चैनल और मेक श्योर टू लाइक द स्ट्रीम। बाकी फ्यूचर में भी अच्छे गेम्स में स्ट्रीम करते रहूंगा, तो मेक श्योर टू भाई लटके रहना भाई मेरे साथ। चलो भाई, गेम ऑन हो चुका है। स्ट्रीम चल रही है। कंट्रोलर से खेल रहा है? हाँ, कंट्रोलर से खेल रहा हूँ। लाइक कंट्रोलर और कीबोर्ड मेरा दोनों कनेक्टेड है, तो कभी कभी कंट्रोलर लाइक मेनली कंट्रोलर ही यूज करता हूँ, लेकिन कुछ लिखना विखना हो गया, मैप खोलना हो गया। वैसे मैप तो अब मैं कंट्रोलर से खोलना सीख गया हूँ, ठीक है ना। तो उसके लिए कभी कभी माउस वगैरह का जरूरत पड़ता है, तो वो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाता है जब मैं यूज करता हूँ तो। बाकी मैं यूज कंट्रोलर ही कर रहा हूँ अभी तो। ओके ओके। भाई अपन ने लास्ट स्ट्रीम में भाई विंटेज वाली कार, विंटेज वाली नहीं यार, कुछ और तो करी थी अपन ने, बढ़िया सी कोई। हाँ, How about मूवी giving वाली, a brand हॉलीवुड new वाली कंप्लीट playlist a करी थी go? लास्ट स्ट्रीम में। तो अपने को ये वाली गाड़ी मिली है, जिसका मैं थंबनेल भी बना रहा था अभी थोड़ी देर पहले। इसलिए थोड़ा लेट और हो गया। बाकी ये रही अपनी भाई, लाइक टॉम क्रूज वाली थी क्या, जिसमें ऐसे गोलियां वोलियां रहती है, आगे से निकलती है गोलियां वोलियां। अभी तो ज्वाइन नहीं हुआ मैं, अभी तो एक्सेप्ट किया था भाई, तेरे को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। जेम्स बॉन्ड, हाँ जेम्स बॉन्ड। किधर अपनी पास? हाँ, आ गया, चलो भाई ठीक है। कल इसको मैंने अपग्रेड भी नहीं किया था, इसको अपन ने क्लेम किया था और फिर स्ट्रीम बंद कर दी थी। ज्यादा खेला भी नहीं था। आज कौन सा करेंगे, वो देखो एक और बंदा भी चला रहा है सेम मेरे जैसी गाड़ी। वेल, आज कौन सा प्लेलिस्ट कर सकते हैं भाई अपन। पैसे भी तो होने चाहिए ना प्लेलिस्ट के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए अपने तो पास। अपने मोस्टली बहुत सारे प्लेलिस्ट कंप्लीट कर दिए। देखो ये वाला प्लेलिस्ट तो मैं खेल नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए बंडल खरीदना पड़ेगा, और जिसके लिए अपने को रियल पैसे देने पड़ेंगे, जो कि है भाई 2000 रुपए। तो ये प्लेलिस्ट अपन काउंट नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो ये वाला प्लेलिस्ट छोड़ के, और आई गेस ये वाला, ओके ये वाला कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक ही है जो कि ये वाला है, जिसमें असली पैसे देने पड़ेंगे अपने को, तो ये वाला अपन स्किप करेंगे। और इसके लिए भी आई गेस मुझे लग रहा है, अच्छा इसके लिए एक और प्लेस करना पड़ेगा, तो अपने को ये खुद ही मिल जाएगा। ग्रिड वाला भी बढ़िया लग रहा है यार, ये वाला करे क्या आज? रुक जाओ देखने दो कितने पैसे हैं मेरे पास। अपने पास 7 लाख बक्स हैं अभी, ठीक है, 7,15,000 बक्स है। सो अपन 7,15,000 बक्स के अंदर क्या खरीद सकते हैं और आई गेस ये करना चाहिए अपन को, ठीक है ना। ये भी 6 लाख का ही है, तो बंडल में क्या है? ने बस कार ले लेते हैं अपन। वेल, जो गोटे गोटे प्लेयर होंगे भाई, उनको पता होगा इस गाड़ी के बारे में। Playlist constraints removed. You can now experience it, driver. वेल, इसको जितना अपग्रेड कर सकते हैं, वैसे अपग्रेड करने का फायदा नहीं है, क्योंकि प्लेलिस्ट में वो नहीं होता। लाइक तुम अपनी अपग्रेडेड गाड़ी नहीं चला सकते प्लेलिस्ट में, जब तक तुम भाई अपना वो प्लेलिस्ट कंप्लीट ना कर लो, ठीक है ना। और ये रही भाई अपनी भाई की थार। द क्रू में भाई ने थार ले आए, अपनी दिमाग का यूज करके, ठीक है ना। एकदम बढ़िया लग रही है ऐसा तो है। डैम भाई, बढ़िया लग रही है। बढ़िया भाई, सही में थार लग रही है। डैम भाई।
भाई जिनको जिनको थार बनवानी है भाई द क्रू में भाई इनको कांटेक्ट करना। मतलब चैट में लिख देना, मैं बता दूंगा भाई इनको। वेल भाई चलते हैं नेक्स्ट प्लेलिस्ट की तरफ। रह गया, आजा, नहीं आ रहा क्या? बाकी भाई ये तो वैसे ड्रिफ्ट का आ रहा है, लेकिन ये ग्रिड रेस में इसकी क्या जरूरत है, मुझे नहीं समझ आ रहा। क्योंकि लाइक इस गाड़ी को एक बूट ड्राइवर चलाता था ड्रिफ्ट करने के लिए, जो कि अब अनफॉर्चुनेटली नहीं है इस दुनिया में। पर भाई बहुत ही बढ़िया ड्रिफ्ट करता था वो। आई डोंट नो भाई क्या लॉजिक है भाई इस गाड़ी को खरीदने या ग्रिड स्पोर्ट्स में। देखते हैं कितनी दूर है, 9 किलोमीटर दूर है, बस पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं। और लाइक मैंने आज अपना सेटअप को साफ किया है ना, क्लीन किया है, तो थोड़ा उसका लैपटॉप को मैंने ऊंचा रखा है, तो मतलब सही दिख रहा है एकदम, हेड लेवल पे बैठा हुआ है एकदम। वेल मौसम भी बहुत बढ़िया हो रखा है भाई आज क्रू में। ये गाड़ी बढ़िया चल रही है भाई, और स्टॉक है ये। Damn, मुझे बनवानी है। तुमने तो बनाई है। तुझे क्या बनवानी है भाई, तू तो है भाई क्रिएटर। खूब इसके एग्जॉस्ट आगे लग रखे हैं, डैम। क्या लगता है भाई इतनी देर में भाई प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगा भाई सारा का सारा अपना द क्रू का? वेल अपन एक स्ट्रीम में कम से कम एक प्लेलिस्ट कंप्लीट करके नेक्स्ट प्लेलिस्ट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना? लाइक लास्ट स्ट्रीम में भी अपन ने दो प्लेलिस्ट कंप्लीट कर दिया था।
वेल देखते हैं भाई इस टीम में क्या होता है। वेल तुम लोग ट्रेलर देखो, मैं What up, आया एक everybody? सेकंड। Brian Scotto here from the Hoonigans, and this is the Gymkhana Grid Masters playlist. We'll go for it. So, like, How many times I've heard this? have you ever listened, though? The crew at Motorfest invited us out here to do what Hoonigan does best, and that's build a Gymkhana right here in Hawaii. For this, we obviously need a driver that's ready to go fast and break a few things along the way. Before becoming a proper Gymkhana driver, you're gonna have to master the craft, and that means a bit of workshopping and a lot of action. Every Gymkhana driver gets a dope machine, and you will get yours. But first, you're gonna have to get to the end of this. No room for cautious driving anymore. Here, you drive like a hoonigan. ओके आई एम बैक। भाई मेरे लैपटॉप की फैन की आवाज तो नहीं आ रही ना, कि बहुत जोर से चल रही है भाई वो। होप सो ना आ रही हो, ठीक है। एक मुझे भी नहीं आती क्योंकि मैं जब दोनों ईयरफोन लगा लेता हूँ तो मुझे तो नहीं आती, तो आई होप से तुम्हें भी नहीं आती होगी। To the next objective. Scott is waiting to introduce you to your new playground. Here, you're going to learn the ways of Hoonigan through various workshops set up by their team. Once your training is over, you'll be a real Gymkhana driver, capable of leading your own Gymkhana. Perform multiple But let's start at freestyle the beginning. actions. Each action will give you points. Reach the objective and cross the finish line before timers end to win the event. Okay. So like सोलो इवेंट भी है, सोलो भी कर सकते हैं, लेकिन अपने पास क्रू में एक प्लेयर है तो उनको भी ले लेंगे। लेट्स सी भाई कितने मल्टीपल ट्राइज लगते हैं अपने को। लाइक पहला फाइट ट्राई तो वही लग जाता है समझने में क्या करना है। Yo, what's up? Scotto here from Hoonigan. Hey, I'm super stoked to see another aspiring Gymkhana driver. I want to Gymkhana welcome you भाई, to Tire Slayer Studios, Indian नहीं। our headquarters. The Motorfest gave us free reign to create our own Gymkhana grid playground and practice our craft. This is the place. आज मीशा आएगी। अच्छा हाँ ना, मीशा का भी स्ट्रीम है आज तक में, बताया था उसने। Show me your creativity, and you might get your chance to become the Gymkhana Motorfest driver. But for now, let me just show you around. You're gonna love it here. होनीगन भाई क्या लग रही है दाम। Looks like you're not the only one working out today. Lots of drivers out to burn rubber. No pressure. There's no need to rush this morning. Hey, this guy ahead, he's doing great at donuts. New rule. The more tricks you perform, the more bucks you earn. But wait too long between tricks, and the bucks counter will drop. That bonus is for true Gymkhana Masters only. Our 360 Madman is back. Go slide his line, just follow his tire tracks. भाई सीख गया हूँ भाई मैं ऑलमोस्ट। लाइक थोड़ा मोड़ा तो ठुकना चलता रहता है। That's why I love this place. You have a wrecking ball, and you always have guys to get creative with it. Performing the wildest tricks. This is the Gymkhana DNA. ओह मजा आ रहा है भाई। लाइक कंटिन्यूस ड्रिफ्ट होती है ना, तब मजा आता है।
भाई क्या गाड़ी है भाई, बढ़िया। क्या सेक्सी ड्रेस It हो takes रहा a है bit भाई। of preparation to become a Gymkhana driver. A lot, in fact. But for now, just remember this. If you have the right mindset, you'll be capable of anything. Like drifting to the edge of a canyon, or jumping over a helicopter, or, I don't know, anything. We're coming to the end, and I haven't even told you about this monster that spits fire out of its V8. I mean, you are driving the mother of all Mustangs. Cross that line, and I'll tell you more about it. डैम भाई, क्या ड्रिफ्ट मार गया आज, मजा ही आ गया भाई। 4700 पॉइंट फर्स्ट ट्राई में। हाथ बैठ रहे भाई कंट्रोलर में, धीरे धीरे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर डे बाय डे। So in the first कैसा लगा भाई मेरा event, you were ड्रिफ्ट, to get बताओ to drive सही the सही बताना, Unicorn. झूठ मत बोलना, Realize that's बिल्कुल the बता रहा हूँ। wildest Gymkhana machine we have ever built. You're a lucky one. It took us 2 years to transform a 1965 Mustang into that. The updated version uses the same Ford V8, but this time with 2 massive turbos. Let's see how you did on this first outing. We'll film a few moments, a good way to see how you progress through the playlist. It's gonna take some time for you to harness all of this power. This thing makes crazy torque. It's not exactly a ride for beginners. All right, look, we're gonna keep the Unicorn, but we're gonna stay on the grid playground. I wanna see how accurately you can actually slide this thing around. डैम भाई मजा आया। रिप्लाई जीतना, अच्छा तो वही नहीं है। रिप्ले जितना अच्छा वही नहीं मतलब। Come on, driver. The real Gymkhana quest starts now with your first drills. Score as many points as possible by performing the requested stunts, and you're sure to impress Scotto. Shouldn't be an issue. The Unicorn was born to stunt. रिप्ले जितना था, हाँ वही वही भाई। उतना अच्छा नहीं होगा यार, उतना अच्छा है ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं। उतना अच्छा कर लूंगा तो भाई फिर बेरोजगार हो जाएंगे ना, फिर मैं उनका काम छीनना नहीं चाहता, समझ रहे हो। मैं जानबूझ के अच्छा नहीं कर रहा हूँ तो दैट कि भाई उनका घर चले। अगर मैं अच्छा चलाने लग गया तो हायर कर लेंगे ना मेरे को। Okay, first training session, we're gonna rough up the Unicorn a bit. We're focusing on Gymkhana essentials, big slides, and precision. Get the right amount of points, and we move on. You'll love the next trick. It's the भाई ये grind स्विचिंग rail. के लिए भाई To grind these, you need to be properly aligned and to hit them at a high speed to slide all the way. अरे हट दिया। अब आ रहा हूँ मैं। On your right and back again. अच्छा यही करना है क्या 2-3 बार? A figure 8 ahead. Try not to slide too wide.
Now toss it back the other way. वो वही तो नहीं होता। Up for a little grind rail? Passing through these tunnels earns you points too. They force you to be precise. Come on, one last round. Give me a few more tricks. Dude, the unicorn, that's a tire-slaying monster. Don't be shy with it. ओहो क्या लॉन्ग भाई मारा मैंने। Hell yeah, that's my driver. The first time we installed the grind rail was in Florida. We thought a car doing a skateboard trick, man, that's gotta be cool. And it was. Cool moment, Down. but still a bit light. Give it another shot. Another shot, why भाई why? अपन ने कंप्लीट कर दिया। करेंगे जरूर नेक्स्ट टाइम। Give it a next shot. क्या भाई और कितना करना है भाई You're points? just taking your first step in the quest to becoming a Gymkhana master. The tricks we set up require a ton of precision and therefore training. Proper car control requires timing and impact. Everything is weight balance. Engage the brake hard at that perfect moment, get proper steering, but above all, never lift. Let's see how you handled your first slides with the unicorn. वो इतना बढ़िया करना है क्या अपने को? All right, so now the real test is going to be whether or not you can manage to put this all together in real Gymkhana conditions. First, I got this first stat I want to put together. There's two cars I want to see go head to head. Take your pick. Bye for now. Don't forget that you can enjoy the playground as much as you like in free drive. A great way to hone your new skills. As Scotto said, let's take a break ये तो before बढ़िया गाड़ी है resuming यार। your Gymkhana quest with a This एकदम versus ड्रिफ्ट That मार रही है episode. बिल्कुल एकदम मोड़ पे ही। Hoonigan does countless car-related things, from custo to pro racing. But one of their favorite activities is as simple as it is fun, to compare cars by racing them. आगे चला गया। Today, we're comparing two cars that are very special to our host. You'll find out more later. For now, you just have to pick your horse. ओके भाई ये कौन सी गाड़ी है वहाँ बढ़िया दिख रही है? स्कॉट वर्सेस स्कॉट। ऑडी लो, ऑडी नहीं है मेरे पास अभी। अच्छा ऑडी लो, ओके। क्या आज ही The गई Coupe तो थी। Quattro, a turbo monster with infinite blueness. और से बढ़िया दिख रही थी वैसे। अच्छी हैंडलिंग है वो। You're into this versus that event. The guys and I do it all the time.
We put two cars on the grid and see which one is the fastest. We only compare cars for the fun of it. Don't worry if you lose. But let's see if you bet on the right horse. भाई हैंडलिंग तो सही है लेकिन ड्रिफ्ट नहीं हो रही है इससे थोड़ी अच्छे से Our two competitors today belong to the collection of a true Volkswagen nerd, me. These cars on track, it makes me feel emotional. And a little bit anxious, to be honest. Don't crash yours, please. I'll tell Gary the same thing. तो ड्रिफ्ट करना ही नहीं है क्या इसमें? ओके, तो ठीक है। हाँ भाई ग्रिप बहुत अच्छी है। एकदम भाई जमीन से पकड़ के है। This race is like seeing a Jack Ferdinand Porsche fighting a buffed up August Hork in the octagon. In the red corner, the 965 Turbo, upgraded to over 400 horsepower with Japanese aesthetics. Love this. And in the blue corner, the 1990 Coupe Quattro with a big turbo that takes it up over 800 horsepower. A good little boy. They both have a lot of power and they're both insane. I'm not going to bed before kissing these two beauties goodnight. It calms me. Listen, you keep that to yourself, all right? It's just, you know, I'm really proud of these machines. The Quattro is teaching the 911 a lesson, ladies and gentlemen. This fight is exciting. Fight cheating! See the volcano? My guys are preparing a first Gymkhana test for you over there. Things are gonna get real. भाई डर्टी गेम्स खेलना आता है भाई तुझे वैसे। The end is near. Oh boy, it's gonna be tough watching either of my babies lose. If you want to push the car to its limit, now is the time. Audi blowing Porsche away. This race is sick. That wins. ये क्या था भाई? Sorry about that, Ferdinand. मैं ऐसा गान उठा दिया भाई पीछे से निकल जा। Damn भाई। All right, all right. You did great. But honestly, this versus that was heartbreaking to watch. Okay, इस बार side, Porsche देखते हैं Porsche क्या। You've got this 1990 Audi Coupe Quattro that took me a mere 2 decades to see crazy hill climbing beast. And on the other, the ultimate goal for any VW, Audi, Porsche nerd like myself. One of the first two cars that Rawwell ever built outside of Japan. Check out the hips on that thing. I know we patched this whole thing together, but I just can't watch either of these lose. So I'm just gonna keep my eyes closed for this one. All good? Can I open my eyes now? Let's meet at the foot of the volcano. It's time to put your skills to the test in an actual Gymkhana. Yoo-hoo! भाई यार इनको कम से कम लाइक प्राइज मनी में तो वो करना चाहिए ना कि लाइक अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ 5 लाख बक्स तो भाई कम से कम भाई 1 लाख तो ज़्यादा उसमें से मिल के ऐड होके आना चाहिए लेकिन उसका आधा भी नहीं मिलता। Call me when you need me. Back to the Gymkhana mindset. This event is a validation event, meaning you'll need to use the skills you acquired on the playground. Scotto wants to see if you can use them in a time attack.
no लेकिन मैं longer be ऐसे your map वॉल for के this ऊपर नहीं चढ़ event, सकता क्या? replaced by a fully Like wall modified ride. third-gen Camaro. Hoonigan created this car at Chevrolet's own request. ऑलमोस्ट लाइक होते रह The गया है brand हर बार. wanted a special car for a special engine. A 632 crate engine, also called a big block. Hard to miss, this engine literally pierces the hood. Actually, it doesn't even have a hood. हो स्मूथ. ये नहीं भाई यार. ऑलमोस्ट भाई ऑलमोस्ट. अरे अरे भाई इतनी मुड़ती नहीं है यार इसके कंट्रोलर भाई. लाइक मुड़ती है लेकिन वैसे नहीं मुड़ती जैसा मैं चाह रहा हूँ. लाइक बहुत कंट्रोल्ड है भाई इसके. पीछे आ गया. Good luck with the test, driver. लाइक उसका सेटिंग्स देखा था मैंने कि वो करना पड़ता है यार. लाइक टर्निंग पॉइंट बढ़ाना पड़ता है ताकि वो एकदम ही लाइक मैं पूरा राइट करूँ तो पूरा राइट हो, या पूरा लेफ्ट करूँ तो पूरा लेफ्ट हो जॉयस्टिक से. लेकिन वैसा होता नहीं है अभी. मैं भूल गया कौन सा करते हैं वो कंट्रोलर के लिए. लाइक मैं भाई पूरा मोड़ दे रहा हूँ कंट्रोलर का जॉयस्टिक लेफ्ट साइड में, लेकिन वो लेफ्ट जा ही नहीं रहा पूरा. लाइक स्टक हो जाता है, सीधा हो जा रहा है. तो मेरे को वो भी सही करना पड़ेगा. All right, I'd be lying if I didn't happen to mention a few drivers might have gone down the ravine. It was kind of rough, but that's not going to happen to you. And after all, the Camaro, virtually unbreakable. Good luck. ये कौन सी गाड़ी है? You're probably wondering, why a chopper? You'll find out soon. Time to see what you've learned. Finish the race on time. Do as many tricks as you can. And on top of winning that money, you'll win my heart. Deal? That big block is ultra powerful, and that's not a euphemism. But she's not a natural-born Gymkhana machine like the Hunicorn. You can drift the street car for sure, but it's at your own risk with the handbrake. अरे भाई ये तो सीधी चली नहीं रही है. और ना ही स्पीड है इसमें.
अबे इतनी स्लो क्यों है? Yeah, you're gonna jump over it, like now. ओ भाई हेलीकॉप्टर के ऊपर से। Now that's what we call proximity. This type of moment in a video with slow-mo, now that's badass. अरे एक तो ये मुड़ जा रही है तो फिर मुड़ नहीं रही है दूसरे साइड है। अब थोड़ी ज्यादा स्पीड हो गई। अब पूरी कम हो गई। हद है भाई। Remember, align properly to take the rail. ये देख। Mulligan. हाँ। अब मुड़ रही है तो पूरी स्लो हो जा रही है। We designed this path in reference to hill climbing, hardcore uphill races. But in a volcano, dude, you take it up a notch. Come on, I want to see you flirt with the precipice a little longer. Kill these tires. तो बैक नहीं है क्या इसमें? हाँ। Probably wondering, why a chopper? You'll find out soon. Time to see what you've learned. Finish the race on time. Do as many tricks as you can. And on top of winning that money, you'll win my heart. Deal? भाई क्या है यार, ये गाड़ी नहीं चल रही है, तो ड्रिफ्ट ही नहीं हो रही है। ये देखो भाई, That big टाइप हो block रहा is है मुझे। ultra powerful, and that's not a euphemism. But she's not a natural-born Gymkhana machine like the Hunicorn. You can drift the streetcar for sure, but it's at your own risk with the handbrake. Yeah, you're gonna jump over it, like now. Now that's what we call proximity. This type of moment in a video with slow-mo, now that's badass.
Remember, align properly to take the rail. We designed this path in reference to hill climb, hardcore uphill races. But in a volcano, dude, you take it up a notch. Come on, I want to see you flirt with the precipice a little longer. Kill these tires. भाई स्पीड ही नहीं है यार इसमें क्या ही करना है Let's call this a do-over. अरे हाय रिवाइंड करके भी नहीं कर पाया भाई Watch out for roadworks, 100 meters ahead. Slaloming at high speed through roadworks, jumping over a chopper, that's why gymkhanas exist. अरे जंप करना था One more time. Follow the chopper, the end is right over there. Okay, that's a shame, but you'll get it next time. Just do the same, but faster. ही भाई ना बकवास था भाई एक गाड़ी छी ना स्पीड है ना ड्रिफ्ट हो रही है भाई सबसे बढ़िया तो भाई हुनी गंती भाई बेस्ट लास्ट में हक दिया किसने मैंने क्या कर सकता हूँ यार भाई गाड़ी अच्छी नहीं है ये बकवास गाड़ी है अच्छी Back to the Gymkhana mindset. This event is a validation event, meaning you'll need to use the skills you've required करना on ही the पड़ेगा लग रहा है ये playground. तो Scotto wants to see if you can use them in a time attack. कितने देर में करना है ये एक तो भाई काउंटर स्टेयर भी भाई इतना गंदा है ना इस गाड़ी के एकदम लेफ्ट जा रहा होता है जा रहा होता है जा रहा होता है जैसे ही लेफ्ट करता हूँ पूरी लेफ्ट हो जाता है Test, the volcano. We really spruced up the place.
मैं कंप्लीट कर देता हूँ। हाँ कर दे कर दे। You're probably wondering, why a chopper? You'll find out soon. Time to see what you've learned. Finish the race on time. Do as many tricks as you can. And on top of winning that money, you'll win my heart. Deal? अरे चढ़ गया। ये देख। That big block is ultra powerful, and that's not a euphemism. But she's not a natural-born Gymkhana machine like the Hunico. You can drift the streetcar for sure, but it's at your own risk with the handbrake. कि भाई इतनी गंदी तो भाई जिंदगी में नहीं करी मेरा ड्रेस। Yeah, you're gonna jump over it, like now. Now that's what we call proximity. This type of moment in a video with slow-mo, now that's badass. अच्छा थोड़ा पहले ड्रिफ्ट मारना स्टार्ट करना है। ओके फक हो गया। We designed this path in reference to hill climbs, hardcore uphill races. But in a volcano, dude, you take it up a notch. Come on, I want to see you flirt with the precipice a little longer. Kill these tires. एक भी टर्न सही से नहीं दिया भाई मैंने। हर बार ठुकाबल भी ठुक गया। Watch out for roadworks, 100 meters ahead. Slaloming at high speed through roadworks, jumping over a chopper, that's why Gymkhanas exist. यार गंदी गाड़ी चला रहा हूँ भाई मैं। Follow the chopper. The end is right over there.
कनेक्टिविटी इशू, वेटिंग फॉर प्लेयर। अरू भाई गया लग रहा है नेट वापस। ओके चलो टाइम तो बीट कर दिया भाई। गया क्या नेट वापस तेरा? All right, well done. That time attack was crazy तेरा and बकवास honestly रेस था not ना भाई very ये। easy to negotiate, especially in a 1,000 horsepower Camaro. This machine owes its power to the extremely prominent 632 big block coming through the hood. We also beefed up the drivetrain, specifically going with straight cut gears, because Gymkhana drivers tend to be a little hard on their equipment and break everything. And by the way, we shot a couple highlight videos. I figured you might want to watch them. This race, it had its wow moments, but the others, they're gonna need to be even more spectacular. Damn. I need you to go pick up this Mitsubishi Evo 9, and then you gotta bring it back to the shop so Ron, the rally guru, and the boys can jump on it and get a build going. Mitsubishi चलाएंगे भाई, Mitsubishi। ये होती है ड्रिफ्ट वाली गाड़ी। वो छोड़ भाई, तू किधर गया? The car Scotto just bought is waiting for you in a parking lot a little further on. You just have to take it back to the Hoonigan HQ so that they can give it their special treatment. Customization is their thing. भाई वेटिंग फॉर यू भाई तेरे। चल मैं एक प्लेलिस्ट कर लेता हूँ आराम से। Mitsubishi Lancer Evolution 9। डैम भाई, कुछ डिजाइन नहीं है, कुछ लोगो नहीं, लेकिन कितने प्यारे लगे। We were lucky to find this Evo in this area. It's quite rare in the US, so I had to jump on it. I've told Ron डैम क्या कॉकपिट व्यू है भाई। ऐसे बड़े बड़े विंडोज वाले, विंडशील्ड वाले कॉकपिट व्यू भाई मस्त लगते हैं भाई, पूरा क्लियर दिखता है। We've got a sunset and great sound. Everything's smiling on us. Chill out a bit. ओके क्लीन ड्राइविंग करनी है अपने को। वैसे ये फ्रंट व्हील ड्राइव है तो क्या बात कर रहे हो? वो छोटा सा खंबा तोड़ दिया तो मेरा इतना कम हो गया क्लीन ड्राइविंग। डैम वेल भाई, अगर ये फ्रंट व्हील ड्राइव है तो ड्रिफ्ट कैसे कर रही है? लाइक मोस्ट ऑफ द गेम्स में भाई मित्सुबिशी भाई फ्रंट व्हील ड्राइव होते हैं और रियल लाइफ में भी आई गेस फ्रंट व्हील ही है, लेकिन फ्रंट व्हील से ड्राइव होती, ड्रिफ्ट नहीं होती।
You see, this car doesn't look like much. Just look at the interior. No frills, classic Japanese minimalism. But there's always more. Mitsubishi gave us a nice inline four-cylinder with already 280 horsepower. That are gonna turn up a bit. Believe me, this bad boy is gonna make an absolute Gymkhana beast. We just need to give it a Hoonigan touch. ओके हम इसे मॉडिफाई करने के लिए लेके जा रहे हैं भाई। I think we add a little carbon to it, a good way to give it some street spirit. Like a carbon hood, roof, and 4 doors. Did I say a little carbon? I meant a lot. Creating a Gymkhana car is always exciting. You start with an idea, toss in some passion, fantasy, and insanity, and किसी ने कुछ नहीं देखा, आंखें बंद कर दो बच्चों। वो अभी मॉडिफाई करने के लिए लेके जा रहे हैं ना, वो मैंने गाड़ी जो ली थी वैसी थी। तो ये गाड़ी इतनी दूर रुक गई भाई मेरे को देख के। अच्छा ठुक गई तो ठुक गई भाई, रिवाइव पे भी कुछ नहीं होने वाला। Finally back to the Hoonigan HQ. Thanks for your help, appreciate it. Ron's inside. He's gonna take care of Mademoiselle. देखो सही हो गई भाई, कुछ नहीं, कुछ हुआ ही नहीं था, खामखा। भाई अरू भाई क्यों किधर गया, एकदम ही गायब हो गया, लाइट वाइट चली गई लग रहा है। You're about to start a new lesson and try new stunts. You know the drill by now. Anything you learn in the playground will come in handy later. New day, new car. You'll be driving the only electric Hoonigan car, which is probably the most powerful Gymkhana car, the Audi Hoonitron. ओह भाई ये गाड़ी ले लेनी चाहिए थी यार, ऑडी वाली जो दूसरी थी ना, इसके साथ बंडल में मिल रही थी। भाई मुझे नहीं पता था यार ऑडी की इतनी अच्छी ग्रिप होती है। लाइक इसकी भी इतनी अच्छी ग्रिप ही होगी शायद, लाइक हुआ जी ऑडी का अच्छा ग्रिप था। Second training session. Nobody at dawn. We've got the playground to ourselves. भाई पर ये तो लाइक इलेक्ट्रिक है। You have to hit the sticks with your car's bumper. Oh. And that is a wall ride. You know how to drift against gravity? You're gonna learn. भाई
भाई इलेक्ट्रिक Today's वाली all ड्रिफ्ट about कार using the भाई skills पहली you बार learned देखी है। before and moving up a gear. New wall ride coming up. Try to skid when you're on top, but be careful. If you take off, you could lose control of your vehicle. All right, let's go again with the precision strike. The trick is not going too fast and just throwing the car in before the first stick. Pull the handbrake if you have to. अरे रे Last round, so I don't want to see one stick standing. क्या बकवास ड्रिफ्ट करी है भाई मैंने। ये करेंगे ड्रिफ्ट। The Hunatron is the most futuristic of all Gymkhana cars. It could drift on the moon, so get me to the stratosphere. अभी वक्त जितने पॉइंट्स चाहिए थे उतने पॉइंट्स तो हो गए अपने पास। गाड़ी की आवाज तो बढ़िया है, लाइक क्यूट है। All right, you dizzy yet? Should be. But I also think you're starting to finally understand what it is to Gymkhana. Donuts, the wall ride, the grind, they're all technical stunts and difficult to pull off, of course. But the true value is in the spectacle. Gymkhana is entertainment. The aim is to create the most dramatic and wild moments. It can take anywhere from 6 months to a year for us to gather all of the ideas and locations and everything. But a driver only has a few minutes to make it all work. Come on, check out your moves. The one advantage to EVs is the acceleration and instant torque. No matter the situation, you'll always have enough power to pull off a stunt. As always, we're going to put your skills to the test. But let's change things up a bit. How about a little of this versus that? Go park the Hunatron. It's big block versus big block. Like we can consider this as well for drifting, but भाई पहले वाली होनिगन ज़्यादा बढ़िया थी मेरे ख्याल से। Like this one, like मेरे जैसा बिगिनर के लिए तो यही बढ़िया है, क्योंकि मेरे से ये भी नहीं हो रही है अभी तक। लेकिन like इसकी कंट्रोल बहुत बढ़िया है। I can drift easily. You've seen how Scotto Switch loves easily. this versus that. तो इलेक्ट्रिक We वाली asked की बस Hoonigan एक ही if they'd be दिक्कत है, willing वो to बहुत race one of ज़्यादा their तेज है। creations against one of our own. 50% Hoonigan, 50% Motorfest. भाई ये Let's call किधर this a लेके जा रहे हैं duo, मेरे को? ये देख
गोटे नेविगेशन भाई। Here's the fight. The Motorfest 3100 vs the Hoonigan's third generation Camaro. These cars have one thing in common, and it's no small thing. They're both powered by the same big block engine. You're free to choose the car you want, of course, but I'm pretty sure the 3100 is going to win. थ्री 100 यू से 3100 कौन सी वाली है भाई? अगर ये वाली होगी 3100 ग्रे वाली, मैं भी वही लूंगा, क्योंकि मुझे वो बहुत बढ़िया लग रही है देखने में, लाइक एकदम यूनिक। वो वाइट वाली रेड वाली तो नहीं चलाऊंगा भाई, बहुत खराब है भाई वो। यही था शायद। चलो यही लेंगे। 3100 big block मैं edition. नहीं ले रहा भाई, वो So the बकवास है भाई वो Motorfest वाली। side, all right, all right. रेड वाली तो नॉट गुड। Wow, the ओ turns हो are हो really हो rough here. क्या प्यारी ड्रेस मारी है। Two Chevys, two big blocks, but only one winner. It's pathetic. It's a bit of an exaggeration, but I really like the concept of this race. Damn, maybe I should have bet on the truck. Nope, you didn't hear a thing. Wasn't me. हीटर डाले बीच से आ रहा है। इससे इस गाड़ी से ना ड्रिफ्टिंग हो रही है। रास्ता काट के आ रहा है भाई वो बीच Second से। lap. एक क्लीन ड्रिफ्ट मारेंगे अभी। ए ना 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 ना, क्या क्लीन ड्रिफ्ट के टक्कर में। Damn, maybe I should have bet on the truck. Nope, you didn't hear a thing. Wasn't me. हाँ मेरे पे ही लगानी चाहिए तेरे को बैठे। Modifying a ये classic ड्रिफ्ट pickup मार ही नहीं like रहा the साला, 3100, I कोई नहीं admit, ड्रिफ्ट से, it's bold. बस मोड़ रहा है I'm गाड़ी। curious about the time they had to make it. On our side, we built that Camaro kit in 3 weeks. We even had it 3D printed. It's not a cockfight. We agree, but let it be said. ओ ये क्लीन था भाई, ये क्लीन था। डैम ये भी क्लीन था। तो थोड़ा सा रह गया। The decisive lap. भाई if you do I do, मेरे को भी कट करना आता है भाई बीच से। ओ हो। सीख गया भाई मैं ड्रिफ्ट। वो गाड़ी सही नहीं थी भैंस की लास्ट मैच में, ये रेड वाली ही मिली थी। ओह क्या क्लीन ड्रिफ्ट मार रहा है।
हर बार इधर ही खींच रहा हूँ भाई मैं। ये एक दो जगह चलता है, एक दो जगह चलता है। 3,100 reasons क्या to bow भाई, क्या out. ड्रिफ्ट You मारी made भाई the right मैंने, choice. Well मजा आ done. गया। तो मेक श्योर टू लाइक द स्ट्रीम भाई, जो नए स्ट्रीम पे और सब्सक्राइब भी कर देना भाई। डैम भाई, वो की खुश हो रहा है, मैं जीता हूँ। जो गाड़ी मोड़ी है मैंने आज। Scotto has decided the format for the next validation event, a race with stunts. This is probably one of the Race last with events stunts. before the Gymkhana Motorfest, so you could be sure that Scotto will be paying close attention to your performance. अच्छा हुआ भाई मैंने ये वाली हुनिगन ली भाई। लाइक अभी तक की भाई मेरे को ये वाली Just हुनिगन like the बढ़िया लगी, और volcano, लास्ट it's मैच a में जो practice गाड़ी run, चलाई थी वो the बढ़िया थी। final one. So let's लाइक see you put those 3100 newfound कुछ नाम skills था to the उसका। test. We turned it up a bit this time. पर You're हाँ, gonna be ओडी racing की एक against और other थी drivers for this one. जो कि मेरे को ग्रिप में बहुत बढ़िया लगी। ये भी बढ़िया है मतलब, The लेकिन car, बहुत the ज्यादा ही track, the स्पीड है electric इसका, atmosphere, it's all लाइक there. कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा I want to show you है। how everything works together in Gymkhana. आई एम नॉट सेइंग कि भाई गाड़ी खराब है, मेरे से Throw नहीं down some चलेगा, crazy ये बोल tricks, रहा हूँ मैं। win the race, and I might just consider you for Gymkhana Motorfest. Good luck. यार ये वाली गाड़ी दे दी यार, मेरे को हुनिगन दे देते अपनी वाली। That's the kind of start that makes me happy. Precision Strike is up next. Remember to adapt your speed and throw your car before the first step. Time to shift gears. You can अरे either settle गई for मेरी winning the गाड़ी। race or try to impress me by doing as many tricks as possible. Not forgetting to blow up your opponents, of course. Slide left. Then slide right. Narrow and dangerous. Perfect. एक भी भाई वो नहीं छुआ भाई मैंने। We've got lightning, red neon lights, and the Hoonatron. It's a blast. Just what we're looking for in Gymkhana. Create a unique atmosphere.
Okay, since I am by first place, so I can now focus on stunts. This part is full of turns, the ideal zone for striking and winning bucks. अरे यार क्या ही ठुका हूँ। Oh boy! The Gymkhana mine, you have it. ओ यार मिस हो गया। GG भाई GG। नाइस। I guess ये लास्ट रेस थी शायद इस प्लेलिस्ट की। But make sure to like the stream भाई जो नहीं है भाई stream और make sure to subscribe to our channel को Color me impressed. You clearly have the drive ताकि तुम and the ऐसी moves streams we're फ्यूचर में भी looking for. अच्छी तरह दिख But the Hunchan does make it kind of easy, doesn't it? Its design and inspiration came from one of the most legendary and important rally cars of all time, the S1 E2 Quattro. 2 Formula E engines allow this thing to absolutely incinerate tires. Thing is, you have the skills. See for yourself. Let's go. That's got to be my favorite moment of the race. Nice work, sport. You finally made it to the big show. My team and the Crew Motorfest are putting on the final details for Gymkhana Motorfest. But we have one more challenge for you. ओके लास्ट है ये लास्ट नहीं था वो बहुत ज्यादा पैसे मिले 36,000 बक्स मिले भाई नाइस Signing out. Bravo, driver. You've impressed Goto. It looks like you're going to be the Gymkhana driver for the big show. Well, just one extra challenge before that. To the Hoonigan HQ. You're back with the Hoonicorn. This car is so iconic, it would be a shame not to call on it one last time. अरे और माइनस हो गया All right, I brought you back here for one more challenge before I give you the keys to the house. Let me clarify.
I took the Hoonigan out for a ride this ये morning. भाई अपनी Not the kind of Hoonigan car की you'd बारी आ expect गई to अभी, take a nice. trip to the seaside, right? So I figured, with that setting, a drift record was the perfect thing to do. You know, casual stuff. All right, you see where I'm going with this? I want to see if you can beat my score in the same conditions. I don't think it's going to be too difficult with everything you've learned during the playlist. भाई से गाड़ी टेढ़ी करके ड्रिफ्ट मारनी पड़ेगी यार. You have to beat my score. You really think you can do it? Use all the elements. Grind, donut, everything you've learned is worth points. ये कार चढ़ा दी मैंने. अब भाई अरे यार इसने ऐसा टेढ़ी करके लड़ाई थी यार अपनी गाड़ी पे. अरे भाई हा हा हा. हो गया ये. Only 30 seconds left. Only 25 seconds left. Only 20 seconds? I'm kidding. I'll stop doing that. It's not fair. ओके 3000 पॉइंट्स करने थे. मैं खामखाई भाई पैनिक हो रहा था क्योंकि वो मेरे को लगा ऊपर का पूरा बार कंप्लीट करना पड़ेगा मुझे. You definitely shredded like your life depended on it. And you left your mark all over the barnyard. We appreciate that.
Yeah, that's what we call victory donuts. All right, look, we waited long enough. You've done it. You're a Gymkhana driver now. Finish the playlist. Gymkhana Motorfest, here we come. Yoo-hoo. I guess playlist complete हो गई है. My random access memory still holds a record of hearing Scotto say that it took a lot of preparation to become a Gymkhana driver. अपने को एक Evo But Mitsubishi no मिलेगी doubt शायद. you're more than ready. You've taken up all the challenges given by Hoonigan. Now it's time to lead your own Gymkhana. The show starts at Barber Harbour Point, and your new car is already in place. Have fun, Gymkhana driver. हाँ, अभी भी नहीं खत्म हुआ. डैम भाई. ओके, अभी तक खत्म नहीं हुआ है अपना प्लेलिस्ट, तो ठीक है. This is it. This is what you've been waiting for, isn't it? To become a Gymkhana master. Motorfest allowed us to spice up the island with a huge Gymkhana grid playground and create the most entertaining race ever, littered with the craziest and wildest stunts we could think of. All right, this is your moment. Drive as accurate as possible. It's your performance that'll make it exceptional. Remember that Evo 9? Well, Ron and the boys finally finished building it. It's not Chris finished and yet, so I think we make it your machine for Gymkhana Motorfest. we'll be driving more. I think it's time to rip it. अरे यार फिर छूट गया. Let's go. Your car, your moment, your Gymkhana. And I'm not going to be holding your hand for this one. Just do what you have learned. We're going to film this race. It's too important. All I ask is that you Checkpoint go miss कैसे हो all the सकता है way भाई? to get the dopest shots we can get. Grind all the rails, burn it to the rims, and jump your heart out. लाइक जंप ही करना है शायद. क्योंकि इसमें पूरा जंप योर हार्ट आउट. तो इवो जब बढ़िया है तो अपने को पहले से लाइक ड्रिफ्ट मारने की जरूरत नहीं. Ah! थोड़ा सा टूट गया बस. कितनी सैटिस्फाइंग है. You're going to love what's beyond the lighthouse. भाई साहब. Hey, yo! That was a close call. ये कहाँ पे ले आएगा ये अपने को? Come on, it's not over yet. This giant pineapple needs its 360. It deserves it. Oh, almost छूट गया था.
छूट गया, Knock yourself out. I फिर need से छूट intravenous गया। tricks. That's it. Gymkhana mastery. तो बढ़िया भाई, मेरे लिए गाड़ी मोड़ दी। ठीक है, कोई भी नहीं, ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। That was dope. And I'm not going to use too many adjectives here. We'll just let the footage speak for itself. Now, let me introduce Gymkhana Motorfest, featuring the Evo 9, starring you. That's right. ये तो एक भी नहीं बार किया ना। वॉल राइड कर लिया हमने, बढ़िया था। The Evo 9, you'll be driving it because you earned it. It's time to reap your reward. Your vehicle is ready for you to play. You've done a gymkhana with this car. You have a unique bond with it. The Lancer Evo 9 Hoonigan version is your gymkhana car forever. ओके भाई, अपना Congratulations! प्राइज व्हीकल आ गया है भाई, अपना लैंसर ईवो। यस, ओके, हम जो लेके गए थे ना इनके लिए, वही इन्होंने अपग्रेड करके दिया, जो कि अब अभी जस्ट चला है थोड़ी देर पहले, और वो हमने हमें गिफ्ट कर दिया। Congratulations, इतना अच्छा हमने गाड़ी चलाया। ये बढ़िया भाई। Time for something fresh and new. अरे यही वाला क्यों आता है भाई A हर new बार? playlist means new adventures, driver. Okay, new shoes, pink shoes, okay. भाई अपन पहले ना नेक्स्ट प्लेलिस्ट सेलेक्ट कर लेते, नहीं तो फिर वो डोंकी डोंग वाला लग जाएगा। New challenges unlocked. नेक्स्ट कौन सा करेंगे भाई हम? ये, इसके लिए ये खरीदनी पड़ेगी, जो कि हम खरीद सकते हैं वैसे। और इसके लिए कौन सी गाड़ी दिख नहीं रही है? वेट, अरे नाम क्यों नहीं हट रहा? ओह, ये बढ़िया दिख रही है, इसके लिए ये खरीदना पड़ेगा, जिसके लिए अपने को प्लेलिस्ट कंप्लीट करनी। ये भी खेल सकते हैं, इसके लिए 5 लाख रुपए लगेंगे, जो कि अपने पास नहीं है। और ये तो भूल ही जाओ। ओह, ये क्या लग रही है यार गाड़ी। वेल, हम क्या कर सकते हैं अब? लाइक इनके और प्लेलिस्ट नहीं है क्या? यही सब है जो थे। ये सब क्या है? पैसे मिलेंगे इसमें लिखे हुए। ओह भाई, बहुत सारे हैं।
Race afternoon. Complete with a powerful touring car, but be careful. You should check your tires at the pit stop. वो ये करे क्या? तो भाई गाड़ी भी दे रहे हैं भाई, अपने को खरीदनी नहीं पड़ेगी, तो यही करते हैं अपन। क्या चल रही है? अरे इसका डिफिकल्टी बढ़ा लेना चाहिए था आपने को। लाइक थोड़ी सी ड्रिफ्ट होती है ना इसमें, लाइक टर्न्स में भी, लाइक मैं अगर कर नहीं रहा बिना हैंडब्रेक दबाए तो भी भाई ड्रिफ्ट हो जाती है। You've lost some grip. Think about your pit strategy and be smart about it. भाई पिट स्टॉप लेना है ना तो ऑरेंज हो गया भाई पूरा। ओके भाई सही टाइम पे पिट स्टॉप आ गया, नहीं तो हो जाती है ऐसे। Your tires are getting worn out. Oh shit. ओ ना 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 भाई थोड़ा सा स्लिप होता है भाई, पूरा ही स्लिप हो जाता है।
cars are getting ओ worn out. शिट भाई भाई छी यार यार ये एंड में आते आते भाई फिसलने लग जाते हैं, क्या करूँ है। जी भाई एक और बार करेंगे भाई ये 2-5 डिफिकल्टी है भाई, 3 सोच रहा था मैं। फक भाई
grip levels are slightly going down. Hit the pit ASAP to avoid getting too much vibration. ये भाई उसके टायर में घुस रहे क्या? सामने ये चल रहा है मेरे। टिंगू नूब। ओके भाई, नाइस। फाइनली भाई हो ही गया। अभी तो 4 लाख हो गए भाई। डैम, ये बढ़िया था रेस। इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि इनमें से कोई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, तो अपन नहीं करेंगे अभी। ओके, तो एक और प्लेलिस्ट कंप्लीट हो गया है अपना, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं अभी? इसके लिए 7,70,000 चाहिए, और अपने पास कितने हैं? 4,80,000 है अपने पास, ठीक है। How about giving a brand new playlist a go? पर दे कौन सा प्लेलिस्ट, वही बात है ना। लाइक आई गेस अपन ये वाला प्लेलिस्ट करते हैं, फरारी वाला, ठीक है। फरारी वाला करे या फिर ये वाला करे? लाइक ये वाला हम अभी कर सकते हैं, और इसमें ये कार भी मिलेगी और 75,000 भी मिलेंगे। और इसमें क्या है, इसमें ये कार थोड़ी महंगी है, ये कार भी मिलेगी और 75,000 भी मिलेंगे। तो मुझे तो ये वाली गाड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है वैसे। तो आई गेस हमें ये पहले करना चाहिए, उसके लिए हमें थोड़े वो खेलने पड़ेंगे।
ये खेले क्या? ये नया लग रहा है। तो करना क्या होगा? हाँ, ये भाई पैसा नहीं है मेरे पास। ये गाड़ी खरीदनी पड़ेगी भाई एस्टन मार्टिन प्लेलिस्ट करने के लिए। एस्टन मार्टिन प्लेलिस्ट नहीं है ये, पर A new playlist experience is here. वेल चलो भाई, अब ये दिखा रहा है कि यहाँ पे जाना है तुझे, तो यही कर, तो यही कर देते हैं। You've got an incoming call from a certain Daddy Donk 303. I'm picking it डैडी up. डोंक। Hey, D. It's Weasel. Remember? From Donk v Lowrider. My dude, I got a plan I think you might like. A party. A little underground racing. Maybe a chance to make a few bucks. I don't see this activity on the Motorfest lineup. Might be better to avoid engaging in such things. Now hold on there, girl. Don't kill my buzz just yet. You guys hear me मुझे out. लगा आगे रास्ता आ जाएगा Listen, यार। I ain't quit Hawaii after our little contest against them lowriders. I stuck around with a cousin of mine, did a little business, made a few deals, know what I'm saying? Anyway, my cousin overheard some folks talking about some street races that's going on right now. Thing is, when he asked them about it, they just froze and got all weird and shady. Couldn't get them to speak another word. There ain't no secret safe from me, D. I'm finna find out like that Huggy Bear brother. So that's what I did. See, the whole thing ain't part of Motorfest. They off the grid like that. Crew goes by the name of Monkey's Kitchen. That's not all. I know where they hang out, too. And I also happen to know that they'll welcome any new street rider, as long as they got a free spirit and a big BMW. Yeah, they got a thing for them European cars. What do you think? You in? Of course हाँ, you उसने are. पकड़ लिया। Yeah. Carl, bring my baby D to the spot I'm sending you. That's where that Monkey's Kitchen is. Mr. Weasel, I'm only programmed to guide festival goers to Motorfest activities. Oh, come on now. How you gonna be like that when we try to have a good time? Be like an AIWA, know what I'm saying? I am not sure what that means. AI with attitude. Oh, okay. All right, I guess. Let's find the monkeys. Now that's what I want to hear. See you, folks. ओ यार, वो अपन तो BMW प्लेलिस्ट के पास जा रहा है, उसी साइड है।
क्या भाई नियर मिस था। साइड से आना है क्या? हाँ फिर इसका एंट्रेंस किधर है भाई? अरे जब इसका रिक्वायरमेंट फिल नहीं है तो मेरे को इतना दूर क्यों लेके आया यार भाई, हर बार ये पहले सेलेक्ट हो जाता है। हद है भाई, भले कर सकते हैं अपन, कर ही लेते हैं यार। These guys, they off the grid like that. Crew goes by the name of Monkey's Kitchen. Headstrong, sturdy, grounded down to earth, earthy, spicy, jerky, ruthless flows just dirty, machinery, murky, quirky, gangs just dirty. They don't keep the flame, can't burn me. Kill it with a little sound, just worthy. Feel it, break it down, yeah, let me work it. Link up like up here, like a circuit. Tell me, show me how you work it. Drip, drip, drip like an IV. Icy, cold but spicy. Drip, drip, drip like an IV. Icy, cold but spicy. Drip, drip, drip like an IV. ओके भाई, इंट्रो तो बढ़िया था। Man, this is dope. I'm telling you right now, you're not gonna regret this. सात रेसेस है भाई, 4 5 6 या 7 रेसेस है। Another activity awaits. Ooh, it's the perfect time to make. वेट, इसका अपग्रेड कर सकते हैं क्या अपन? ओके कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते, ये बहुत गलत बात है Content for my socials. Gambling, custo, wild races. Oh, my OG's gonna love it. Taking care of your community is taking care of your business, D. Know what I'm saying?
Okay, I got the lowdown on today's little gathering. Meeting points North Louis. Time to see what these monkeys packing under their hood. We're doing this. It's you and me, bruh. Well, Oh, my bad. You, me, and our rogue AI homegirl right here. AWOL from Motorfest and ready to kick some apes. Kill some Can you get apes. our boy to the place I forwarded you? no problem, Mr. Weasel. GPS is all set. Right on. Parking. क्या मस्त ट्रक मार रहा है लोग ऑलमोस्ट छूट गया था भाई इनकी एंट्रेंस इतनी छुपी हुई क्यों है भाई दिखती भी समझ में ही नहीं आती दिखेगी ये तो All right, D. The pimping of your car starts now. Let's start with them fenders, ये हुई ना especially that बात wheel camber. Look, don't hold back now. Get एकदम that नीचे sauce on there. चिपाट यस पूरी ड्रिफ्टिंग वाली बना देंगे भाई इसको भी कौन सी बढ़िया लग रही है ये हाँ अपग्रेड नहीं अरे भाई पैसे लगा दिए मैंने अगर पैसे गए मेरे और अपग्रेड नहीं हुई मेरी गाड़ी फिर देखो All तुम right, D. The pimping of your car starts now. Let's start with them fenders, especially that wheel camber. Now, don't hold back now. Get that sauce on there. भाई अगर पैसे वापस नहीं मिलेंगे ना फिर तुम देखना क्या ही कर सकता हूँ मैं You love it, right? Yeah, you do. Now, these guys love to gamble. So let's see what kind of money they're putting on this race. बैट लगाएंगे भाई अपन Looks like they want to ante up. More aggressive opponents for more money. And my bet हाँ is that चलेगा it's भाई just the मेरे को beginning. Hell yeah, 10,000 बैट पे That's लगाया what's up. अपन ने 3 डिफिकल्टी है What's up, y'all? This is your boy Weasel D, aka ओहो we are Daddy live Dog, भाई on coming to you Instagram from Monkey's ये Kitchen Party. MK is taking over the street with a wild race is just about to start. The rules, Pizza Atlanta, it's a street race, my dog. There ain't no rules. What do we got? A BMW M3. European, of course. Not bad, not bad. Zooming in on these rims, though, I gotta tell you, they out of this world. Shiny like my uncle's Damn. silverware. मैं उनके कमेंट पढ़ो भाई क्यों वापस मंकी स्ट्रीट रिव्यू टाइम एज फास्ट भाई
तो ये आगे वाली जैसी अपनी देखो भाई क्या ग्राउंड क्लियरेंस कम कर रही है भाई पूरी एकदम चिपकी हुई है जमीन से। Things are getting real, my OGs. Let's see if the monkeys can drive as good as they party. Now you still on the Daddy Dog 303 feed, where I take you on a dive into the MK lifestyle. The race is on, and our badass driver is currently in the pit with his dash cam and shit. Hi, boy D. Say hi, D. Yes, you can see our brother here ain't the इसमें chatty कोई type. रूल है नहीं तो Prefers अपन to कुछ play कह it भी like नहीं सकते Ryan कौन G. कहाँ से आ जाए। Solid and focused. I respect that. Hey, I don't see no silent Bob jokes in the chat. You got this, D. Rock that Beamer M3 from the get-go and watch that traffic. Ain't nobody gonna pull over to let you through. Not like they have time anyway. You got to swim, you know what I mean? Improvised, chaotic street races in broad daylight. I don't know if that's provocative or plain insanity, but I love it. भाई वो उधर मुड़ गया मेरे को लगा उधर मुड़ना है भाई। मेरी नजर एकदम आगे वाली गाड़ी पे है। And that crazy ass jump right there set the tone right away. Going down the canal, of course, because these guys, oh, they don't give a crap. भाई कोई ठिकाना नहीं है भाई उसने शॉर्टकट लिया होगा। तो जो भाई सब आगे निकल गया मैं पीछे रह जाऊँ। Recap for the latecomers. My friend D and I are taking part in the Monkey's Kitchen movement. He drives, I stream. Yeah. वो तो देखिए मेरी गाड़ी कैसे कैसे हो गई अलग। ये As you can see, the collective has already got hold of Kalu. As you can MK see, colors all over town like it's I'm their not own dead. freaking room, and using these damn streets like a playground. Just because, screw it, they're the Monkey's Kitchen. भाई ये 3 डिफिकल्टी है ना भाई। वो दिख Ain't क्यों no नहीं रहे वो party दिख like a गया dog party. But I gotta say, these guys know they stuck. लेकिन दो दिख Kalu's गया। 100% MK territory right now, and ain't nobody in town who dare say otherwise. हट जा भाई इतना या तो वीडियो चला ले यार या तो क्रॉस हो जा। एकदम टर्न्स पा के रुक जाते हैं The गाड़ी। kitchen is open for business. बेट 1
गाड़ी वो सही हो जाएगी थोड़ी देर में. What's up, D, my man? How you feeling? The monkeys are setting up another round in Kailui. Got the location for you guys right here. Kara, if you don't mind. On it. Hell of a first race. That wasn't just racing, it was art. Know what I'm saying? And I gotta say, you did me proud back there. Oh, for real, you was dope, man. Whole community was like, damn, that dude really can drive. Wasn't it a little dangerous, though? Oh, come on now, girl. You're not gonna impress the monkeys with that attitude. All right, my bad. I believe this is the place. Let's get back to the kitchen. And now the rims. One of my favorite parts. The first real aesthetic gesture that defines your car. वो ये बढ़िया लग रहा है. हाँ, ये वाले रिम्स बढ़िया लग रहे हैं. कौन से लगाने चाहिए? ये तो अनलॉक ही नहीं है मेरे पास. और क्या था? ओह, दिल वाला. ये लगा ले क्या? ये बढ़िया लग रहा है मुझे तो. टर्बीन X7 लगा था, ठीक है. नहीं यार, मुझे तो स्टॉक की बढ़िया लग रहे हैं. उतना कुछ फ्लैशी अच्छा नहीं लगता यार BMW में. And now the rims. One of my favorite parts. The first real aesthetic gesture that defines your car. Woo! That's really something, big boy. ये ठीक है, चलो कोई नहीं. No ESP. हाँ ठीक है, चलेगा. No ESP. Okay. It's right up your I'm alley. up for G. it. Easy money. I can handle that. Alright, OGs, we back in the Kailui canals for the second race, as you can see. And it's, ooh, man, it's on already. Man, I swear these MK guys ain't got no time to lose. They're here to take care of business. And as a businessman myself, I respect that. Oh, shit! Guys, I want to take a moment right now to talk about what just happened. You saw it, right? I mean, the plane. The damn jump. That was some crazy MI stuff right there. And our boy D didn't even blink. How about that? The city belongs to the street riders, folks. What a feeling. Y'all know I drive a sport in a custom BMW M3 E46. But what about the rides the monkeys are driving right now? I think I saw a Volkswagen, like a Beetle on juice. But chat, I'm gonna need y'all to give me a hand with that. Oh, So what y'all spot damn. for me?
got us a Golf and other BMWs such as the 1990 N3 E30. Old school, angular, big daddy shapes. Oh, that's my jam. And then you got the Audi RS2 Avant. Oh, right, that's the green station wagon. Haha, man, whoever's driving this car must have took it straight from their dad's garage, added some little mods to it, and brought it to the race. That's some monkey's kitchen move right there. Guys, I'm gonna be real with y'all. I seen cars do some crazy stuff, but the way the MK proves there's no place a car can't get to, I love it. वो किधर गायब हो गया? These closing in. You have the choice, my boy. Going above or going through. What's it gonna be? All right. Embracing the whole monkey see, monkey do shit. My man. भाई ये क्या 360 एंट्री मारी है भाई, नाइस. What they gonna do about it? Damn. गाड़ी की थोड़ी ऐसे तैसे होगा लेकिन कोई बात नहीं, चलता है. मैटर वो करता है कि हम जीत गए, वो फर्स्ट प्लेस पे. I'ma go ahead and say it, man. That MK Collective, they not just for show, man. I mean, we're dealing with some serious freedom addict lunatics right here. And from what I heard, this was just breakfast. Just a little MK Fruit Loops and warm milk. But now we're gonna see what the kitchen got cooked up for the main course, know what I'm saying? You're still talking about car races, right? You damn right, shorty. And I'm not just talking here. I done got intel on the next gathering. This time, they're going what they call the monkey special. You OGs better be prepared for anything. Kara, I need you to guide D through the next stage of the E46 customization. Are you sure, Mr. Weasel? Customization is not really part of my knowledge. Trust me, I know how to read people. You ain't got a body, but you got Reach the style. flare, find your You'll do path, fine. be aware of traffic. Okay. मतलब इसमें कोई डेडिकेटेड रूट नहीं है, अपन को खुद से रास्ता ढूंढ के जाना पड़ेगा. बस बीच में एक फ्लेयर गन आते रहेगी अपने चेक पॉइंट के लिए. ओके, तो पता है यार, अपने ग्रैंड रेस में खेला था शायद, लाइक मल्टीप्लेयर रेस में. So, driver, I think you have to be subtle, but Weasel left us a message. Kara, I don't want no grandpa bumpers or skirts. We need something distinctive to race. So let's find that. If you're proud of your choice, so am I, driver. The monkey's kitchen Nitro is daring you to unplugged. increase the No burst difficulty of of the speed. race and disable your Ooh, nitro. that's We don't want to unique, do that, bhai. do we? That's Okay, unique. that's Okay. very brave of you, driver. भाई Something's going बीटल on, बच you know गया. what I mean? I'm streaming live from an MK car, OGs. Holy biggie, that's the kind of setup I like. I can't say too much about the place, Moolah 99. It's a private party. Damn भाई, ऐसा होता होगा रियल में. Oh, geez, it's the monkey signal. From now on, the street riders will be racing for the flares. It's gonna be a wild, wild race. Damn भाई, मजा आएगा.
इनकी कटसीन्स इतनी इमर्सिव है ना, ऐसा लगता है कि यार अपने लिए ही है भाई, अपन ही है इसमें तो। It's on, D. Follow those flares over there. D needs to focus right now, guys. I'm shutting the stream off. Talk to you later, OGs. Between you and me now. That's right. That's the spirit. You see a path that gets you to the flare faster, you take it. It's all about observations and quick decisions. अच्छा बूस्ट भी तो नहीं है, मैं बूस्ट मार रहा हूँ। That's one. Now look for the next flare, OG. चल 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 भाई। हो गया बेड़ा यार भाई। एक बंदा मेरे आगे है, वो साला रुका हुआ है कि कब आएगा ये। Mulligan. That's it. The flare's right on the other side. That's my man. This parking lot seems like a good call. This, fellas, was the monkey special. Free races, free spirit, free Nice. show. Never seen anything quite like it. ऑलमोस्ट 34,000 मिला भाई अपने को। ये थोड़ा यूनिक है डैम। Kara, my sister from another transistor. I got the news from the great Rafiki. D's going to Kihei. Oh, the
monkeys are done with the streets of Kowloon. Now, they want to travel around the world to bring more world peace than Miss USA. Wow, this sounds big. Damn right. And there's gonna be new monkeys in all different buff cars. D-boy, we need to make a big impression again. These street riders only got to see the back of your car, nothing else. You feel me? In other words, you would like Dee to stay first the whole race. Ha ha! Indeed. I think I'm starting to understand your software, Weasel. Yeah, if you say so, robot girl. Anyways, we're gonna spice up your car a bit so the dudes behind have something nice to look at. Big rear wing for more aerodynamics and style. ये पीछे क्यों जा रही थी भाई? मैंने जब एक्सेलरेटर दे रखा था आगे जाने का। I know it's momentum पर like रुक गई थी वो एक बार के लिए। तो इनका पोस्टर भी नहीं दिखता यार, कहाँ छुपा के लगा रखा है। Hey, you can't be victorious without being ostentatious. Now, what's on the monkey's bet menu? देखते हैं भाई इस बार क्या बैट लगा है। टेप मिनिमम 3 ओके ठीक है। नो रेसिंग लाइन डाउन। अरे ये तो These guys talk like we're in a video game. तो ठीक है Yeah, we'll take a भाई। little slice of that action. What up, guys? Daddy Donk is in sweet Kihei, West Maui, at the little neighborhood watch organized by the MK. You know these are some proper citizens right here. They don't want no troublemakers disturbing this cute little town, you know what I'm saying? D is already in the fray. I'll pass on your messages if you have ठीक it. है भाई। So what's on the grid? I'm taking a closer look for y'all. From here, I can see a BMW M2 with a gold dress. Very classy. A Mercedes C63 AMG Azure paint. It's not really my thing, but it fits the vibe of the place. Damn! What's this mysterious black beauty? Migani RS. Never heard of it. Someone in the chat looking for info? Oh! The D has to anticipate these bends. Only right angles. Shadow Willie 99 got the info, guys. Thanks, brother. So, the Megane RS is the sport version of the French car, the Renault Megane. Hold up right there. The French make cars. This just did. 280 horsepower that can easily compete with the best VW Golf or other German models. Some dudes say it's kind of a French 911. What the? Nah, you ain't fooling me, man. French 911? Nah, you messing with a Shadow Willie 99. Now, if we talk
Fucking French food भाई and मैं सही wine, जा रहा I'ma होता हूँ, take बस it थक जाता serious. हूँ ना I बीच mean, में। I am something of a gourmet. I love me a baguette. Because? Come on now, baby. You ain't pranking me with that fake shit up in here. उस साइड क्यों जाता है भाई? I see you in the chat writing French words. Got pamplemousse, amuse-bouche. What's that? I hope it ain't nothing dirty. अरे You gonna यार get my प्रदेश, ass mad. Y'all can sleep tight, Kie. भाई Neighborhood बहुत प्रैक्टिस watches की है here. यार अभी। That's what I call a bunch of ठीक good है, citizens, am I right? इसके लिए भी बहुत प्रैक्टिस चाहिए। Call me when you need me. Let's find the next poster. I got a hunch it's gonna be a flare race. You know the drill. An army of monkeys is spread out across the city, shooting off flares everywhere. And you gotta reach them as fast as you can, whichever way they are. I'll cut off the stream to focus on you, my dude. By the way, where's your Kara? You here, girl? AI unavailable. Recalibration in progress. Oh man, what is this? Scares me a little. Man, I've seen movies like this, D. AR starts doing what it wants, always ends bad. Well, maybe you should throw that thing out the damn window. Damn, it's happening. Machines versus humans. Oh, I knew it would. वाह भाई, मैं सीधे रास्ते में गाड़ी मोड़ दे रहा हूँ भाई। सीधे रास्ते में गाड़ी निकल रही मेरे से। ठीक है, ये देखो पत्थर लेके चल रहा हूँ मैं। With my donks, it's chrome mirrored sides and unsullied waxed hoods. मस्त दिख रहा That है। Beamer, I believe you can go a little crazier. Your choice, dude. अपग्रेड भी हुए अपने पैसे से करा रहे हैं ये। छी यार, कैसे लोग हैं, छी। We're used to more difficulty, but a 4 out of 5 without nitro? क्योंकि वापस से Now that's डिफिकल्ट है ये। interesting. नाइट्रो नहीं है इसमें। You see the flare? Two choices, the tunnel or the coast road. Trust your instincts, bro.
Dan McGain is still here. Yo, we ain't taking a loss from no baguette, D. Troublemaker. At least the gardeners ain't gonna need to mow the lawns. हाँ यार इतना बढ़िया जा रहा था मैं। Look straight ahead, dude. अबे भाई यार ये क्या बात होती है भाई। Only one flare left, D. Go for it. This is Daddy Dog live from Key 8. Flares have been shot, monkeys got wild, three, and once ठीक है। again, our driver D was here to steal the show. My pleasure, driver. Yo, D. Get your ass on the highway, babe. No. We're on the move to the big मेरे को लगा Show the यहाँ एक hipsters कार what the गाड़ी monkey's दे रही है। kitchen is all about. What the? Carl, what's going on with you, girl? पता कार ही दे रही। Just getting the kid hyped up for the next round. हो रहे हो Damn, D. I think we broke your assistant. भाई Man, she साहब got so intense the game got to beat her. I गालियों पे downloaded a गाली new दी जा program. रही है। Relax, Weasel. I'm still street legal. Oh, you rhyme now too, huh? Damn Man, भाई। you full of surprises. Enough talk, bit. Time to drive. Ooh, अरे don't यार। wanna mess with the street car up. Let's go.
भाई इसमें तो बहुत सारी Your रेसेस paint है is यार. shitty. You need to up your game if you want to please the monkeys, kid. Woo! This new car is tough, but she ain't wrong. कौन सी कलर भाई ये ग्रीन बहुत मस्त लग रही है ना. ये करते हैं. Brand new paint job? Let's gamble. Oh, Difficulty cockpit 4 out of view. 5. And Damn, cockpit view क्या only. challenges One है of भाई these इसमें. jackass is going to give us a real challenge. Easy, Kara. Easy. That's my OG. क्या एंट्री लिया भाई, ऐसी एंट्री हो भाई, क्या मजा है फिर. Yo, chat, the Waikiki Weasel is still here to host the OG live stream. Today, the monkeys are headed out of town to do a bit of swimming on the motorway. Oh, don't take a piss or you might miss this. यार बूस्ट भी नहीं है इसमें तो, अगर पीछे हो गया तो दिक्कत हो जाएगी. भाई ये क्या था Let's भाई. try that again. ठुक हो रहा है, ये मेरे को ठुक रहा है, अजीब ही है भाई. वो ठुकते हैं तो स्लो भी नहीं होता साले, मैं ठुकता हूँ तो भाई पूरा स्लो. Accident straight ahead. The monkeys will have to get wet if they want to avoid the traffic jam. How's the water, D? Freshen up? Speaking of refreshing yourself, y'all know I've been working on a little business since I've been in Hawaii. Well, I'm proud to announce that I'm launching my very own brand of pineapple juice. OG Juice. The sweet drink for real OGs. Will be available soon on the mainland. I swear, it's straight up Hawaiian sunshine in a bottle. Oh, y'all gonna love it. All right, enough with the self-promotion and back in the race. Y'all know this stream's about love and passion above all else. D is almost at the finish, crossing the big bridge soon. I hope you have some nitro left, dude, because this section is ideal for a burst of speed. नाइट्रो तो नो है अपने पे. This bridge looks like the 7 Mile Bridge in Florida. Nice turf, Florida. And y'all know what you'll soon be तो able क्या हम to find in all इसको कर Florida's सकते हैं grocery भाई, stores? ओवरटेक. OG Juice, the taste of the rainbow. Woo! Yeah, that's right, homie. That's it. The finish line is right there. You see it, D? जो उसको तो नहीं कर पाएंगे पर एटलीस्ट सेकंड भाई विन करना था ये यार. कुछ एक और बार
Yo, chat, the Waikiki Weasel is still here to host the OG live stream. Today, the monkeys are headed out of town to do a bit of swimming on the motorway. Oh, Bye. don't take a piss or you might miss this. ये बनेंगे ड्राइवर। भाई उनको तो यार ड्रिफ्ट भाई बूस्ट है यार, मेरे को नहीं है, मैंने अच्छे से स्टार्ट ही नहीं किया तो Accident straight ahead. The monkeys will have to get wet if they want to avoid the traffic jam. यार उनका बूस्ट है भाई, Freshen up. ये क्या बात है तो? Speaking of refreshing yourself, y'all know I've been working on a little business since I've been in Hawaii. Well, I'm proud to announce that I'm launching my very own brand of pineapple juice. OG Juice. The sweet drink for real OGs. Will be available soon on the mainland. I swear, it's straight up Hawaiian sunshine in a bottle. Oh, y'all gonna love it. ये वापस से लो। अरे भाई कितना हद है भाई, कितना जाता ब्रेक मारो और Alright, enough with the self-promotion and back in the race. Y'all know this stream's about love and passion above all else. तो देखो भैंस की बूस्ट मार मार के जा रहा है हरामखोर का बच्चा। D is almost at the finish, crossing the big bridge soon. I hope you have some nitro left, dude, cause this यार हद है भाई। ओके अपने को भाई स्टार्टिंग अच्छे से करनी पड़ेगी ताकि अपने को बूस्ट मिले बाद में। फिर से आगे दिया, स्टार्ट ही नहीं हो रही अच्छे से। Yo, chat, the Waikiki Weasel is still here to host the OG live stream. Today, the monkeys are headed out of town to do a bit of swimming on the motorway. Oh, don't take a piss or you might miss this. Accident straight ahead. The monkeys will have to get wet if they want to avoid the traffic jam. How's the water, D? Freshen up? अबे ये भाई हाँ भाई ये पेड़ यहाँ पे क्यों है भाई? Speaking of refreshing yourself, y'all know I've been working on a little business since I've been in Hawaii. Well, I'm proud to announce that I'm launching my very own brand of pineapple juice. OG Juice. The sweet drink for real OGs.
will be available soon on the mainland. I swear, it's straight up Hawaiian sunshine in a bottle. Oh, y'all gonna love it. All right, enough with the self-promotion and back in the race. Y'all know this stream's about love and passion above all else. D is almost at the finish, crossing the big bridge soon. I hope you have some nitro left, dude, because this section is ideal for a burst of speed. बिल्कुल भी नहीं है नाइट्रो मेरे पास, थोड़ा सा भी नहीं है। स्टार्टिंग से नहीं हुआ अपना। This bridge looks like the 7 Mile Bridge in Florida. Nice turf, Florida. And y'all know what you'll soon be able to find in all Florida's grocery stores? OG juice, the taste of the rainbow. Woo! Yeah, that's right, homie. That's it. The finish line is right there. You see it, D? The MK's closing in on Honolulu, the beaten concrete heart of Hawaii. Stay tuned, OGs. The Monkey's Kitchen is cooking something real nice for that final course. भाई जब अपनी गाड़ी एक्टिविटी में थी I love the way you moved that. You glided on water like a Jesus in your BMW. तो भाई कलर क्यों करवाया था? तू दिखेगा ही नहीं कलर। Man, I'm starting to fall in love with this AI. Not sure how to process that information myself. Ah, you're cute, sweetie. But I can't be dating anybody that doesn't have a current gem processor. Now, don't play with my heart like that. What's up, driver? वो क्या लग रही है भाई इसके हाथ से। Well, the monkeys are meeting at the Honolulu airport. They plan in 2 races, one last chapter. The first one's just a little peekaboo Honolulu. You know, just saying, the monkeys are in town, don't mind us, just checking out which of your streets is big enough to take our car up to 250. Something very cordial. Yeah, I like polite people too. Respect is important. And after that, the icing on the cake, the grand finale, the ultimate monkey special. Our last free race in Honolulu. I can't wait to see that. एक बार छुट्टी नहीं की भाई, ऐसे कैसे हो जाती है।
to shift into 7th gear, D. This customization moment is sponsored by Ooh, OG Juice. damn. Just try it, and you'll say, thanks, Daddy Weasel. Later. इतना कुछ खास नहीं लग रहा भाई मेरे को तो भाई अपनी नॉर्मल वाली बढ़िया लग रही है ये लेकिन That's some juicy touch right there. मैं They're daring you to drive using a manual Manual, gearbox. bye. Shifting gears when the sound of your engine asks you to. Up to you, D. You got this. Be in tune with your car. Listen to a song, know what I'm saying? Yo, chat. Your OG host is in the big city. Me, D, and a crazy AI followed the monkeys here to the big pineapple. Honolulu, ladies and gentlemen. Ooh, yeah! This crew want to spread the MK movement all over Hawaii. Stopping in every city just like a freaking Taylor Swift tour. Great show, by the way. No Swifties in the chat? Oh, y'all crazy. You gotta love Taylor. My girl is dope. She got that catalog you can't deny unless you a damn hater. Downtown, fun part starts now. अरे यार क्या टूट गया यार भाई ये मैनुअल तो ना हो मेरे से भाई This race goes too fast. It's one large avenue after another, sprinkled with 90-degree curves. This city is the ideal place for creative street racing. Trying to get this city's road network into your head, D. I foresee another monkey special down the line. The monkeys raised the bar cars-wise. But now, we got some new ones that deserve to be put through the Weasel D-Sieve. They brought along a couple Porsches. The GT3 RS, the Spider 718, keeping it flashy, Miami style. Don't ask me where they getting cars like that. The answer ain't exactly rated E, you know what I'm saying? But guys,
Weasel D's pick of the day is unquestionably the arrogant but subtle M4 in vibrant purple with zebra decals, carbon, and insanely cable rims. I'd like to date this car. Makes me want to sink into that front seat. I need this race to finish as fast as possible. And whisper, girl, let's get out of here. भाई मैनुअल में जीत गया भाई मैनुअल में जीत गया भाई Damn, भाई मैनुअल में जीत गया भाई साहब अब भी मैनुअल में क्या One last monkey special race in Honolulu to establish the MK style once and for all. We're gonna race. We're gonna have fun. Let's do our best, my friends. Yeah, sure, Wiz. Come on, Faminos. Everybody, let's go. Enough with that cheesy rated E crap. We're gonna go downtown, make trouble, and we're gonna just some monkeys' butt. You understand? इसके ले ली भाई कारण ने ले लिया है कैसे ले लिया है That's what I do. Man, we should do a little business, you and I. As partners. That's a guaranteed success. What do you say? AI unavailable. Calibration in progress. Oh, the hell is this now? Cora, you still here? Overwriting unauthorized program. Motorfest apologizes for any inconvenience. Oh, damn, D! It's happening again. Skynet. उसने अपना वो चेंज कर लिया कैलिब्रेशन अब गाड़ी नहीं देगी वो Okay. Difficulty 4 out of 5. No touchy matter. No mini map. That's a real ass challenge Just right here. just you, your car, and street. Keep your eyes clean. Messed up brakes. No need to spell it out. No brakes. Period. Monkeys will be monkeys. Damn, भाई. Hard होते जा रहा है धीरे You धीरे. can count on D, Monkey's Kitchen. The monkeys take over Honolulu. Hope y'all are ready, cause them, look at this. Great Rafiki, the time has come to bless our street riders. On the night, my OGs. K-Hoss, that's the kind of start I like. First dilemma on the approach. Our homie D will have to choose crossing the river or continuing to the left. In any case, it's pedal to the metal.
Check it out, Chad. The monkeys have left their mark on the city. This crew knows how to put on a show. Motorfest should be worried. भाई इसके तो ब्रेक भी नहीं लग रहे यार, क्या कर दिया भाई इसको। Jump between those towers on the right. The Shadow G's want the thrill. अरे नहीं चल भाई, एटलीस्ट भाई अपना पोजीशन तो दिख रहा है कि अपन We're coming to the end now. So let me take a second here to thank y'all in the Daddy Dog chat. Y'all killed it. Yo, y'all better believe I'm gonna get the whole MK team down to Atlanta. The A, my place, to meet my dog family. Cause we got a lot in common. Breathe. Let's call this a do-over. End of our stream. Drop your likes on my partner in crime, baby freaking D. This was Daddy Dog 303. Find me on all my socials. Thumbs up and stuff. Peace. It's time to reap your reward. Your vehicle is ready for you to claim. Welcome back, driver. Streetcar? Is that you? Sorry? Is there anything I can do to help? Wait, what happened to my girl? You sound like you've been brainwashed. An unauthorized program had to be deleted from my software. Motorfest policy. But I'm now ready for a new Motorfest adventure. Streetcar is gone? Oh, damn. I love that car. We bonded, you feel me? May I suggest an activity? No, it's okay. Can you just bring D to the monkeys? They got a present. A nice little car to customize. They really feeling you, D. Is the car an official Motorfest reward? Yeah. Yeah, of course it is. Yeah, it's got the registration papers, manufacturer's warranty, and stuff. So everything's in order. I entered the GPS coordinates. That's cool, girl. You're welcome, motherfucker. Oh, वो गाड़ी भी दिया। what'd you just say? We've got a reward vehicle to get, driver. Let's go. Oh, come on. डी के तो क्या ले ले भाई, इस कारण है तो ले ही रही है अब अरे यार वो ठुकेगा ही साला मेरे से ही अब वापिस।
भाई इधर बाइक लाने में मजा आएगा ना, इधर बाइक लेके आएंगे भाई एक बार। कि अपने को सामने जाना है। अरे यार डूब ही गया। We'll get it this time. जो Let's just बात rewind that है। one. ओके भाई, अपना रिवॉर्ड मिल गया है भाई अपने को वापिस। और ये प्लेलिस्ट भी भाई खत्म करते हुए अपनी भाई BMW M2 ही है शायद ये। बता इफ आई एम रॉन्ग। हाँ M2 ही है।
Damn, भाई A playlist is available, driver. Let's roll towards a new playlist journey. इनका क्या करना होता है? वो कितने सारे रिवॉर्ड मिल गए भाई अपने को। New challenges unlocked. वो क्या प्यारी लग रही है भाई गाड़ी। भाई ये एरिया अच्छा लग रहा है, इधर फोटो लेते हैं। हम्म व्हीकल मिड व्हीकल। हाँ ओ ओ हम्म लाइक गाड़ी को उल्टी साइड रखते हैं ना उसको। ऐसे में फोटो लेने में मजा आएगा भाई। ये हुई ना बात। हम्म ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बस ठीक है। ओ फन ओ ओ हम्म और क्या क्या है? ये सही लग रहा है, ठीक है। इधर से लो या इधर से? इधर से देखो, ज्यादा गाड़ी पे लाइट पड़ रही है तो लाइक उतना इन्वायरमेंट पे फोकस नहीं जाएगा, लेकिन इस साइड से लूंगा तो ज्यादा इन्वायरमेंट पे फोकस जाएगा। ये यार मुझे प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन जाना चाहिए मेरे ख्याल से। गेमिंग में ना भाई, फोटोग्राफर। डीएम में भाई, अगर मेरे सर्विस चाहिए तो मेरे मैनेजर से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा यार तुमको, ऐसे सबके साथ मैं नहीं मिल सकता, समझ रहे हो? यू हैव टू लाइक टेक अपॉइंटमेंट। ओहो, गाड़ी के टायर के निशान भी है, ये वाला एंगल। डैम, ये वाला एंगल भी ज्यादा मस्त लग रहा है वैसे। M2 भी दिख रहा है ना इसमें, हाँ ये वाला एंगल बढ़िया लग रहा है एकदम।
टैक्सी बिल्कुल। ओके ठीक है भाई चलो। वो ये ज्यादा बढ़िया नहीं लगेगा, बारिश भी हो रही है। एक और बार चलते हैं भाई। ये नहीं पता था मुझे। ओके बारिश भी हो रही है। हेडलाइट्स ऑन रखते हैं। आहा ओहो क्या लग रही है भाई। ऐसा लाइक स्क्रीन पे बूंद गिर रखी है ना तो बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। और लाइक ऐसे गाड़ी में भी ऐसे छींटे पड़ रखे हैं ना तो वो और अच्छा लग रहा है। वाह सीक्रेट शीट है गाड़ी पे। ये होती है भाई गाड़ी रियलिज्म। हम्म डैम ये वाला एंगल भी बढ़िया लग रहा है। ओके कूल भाई इतना काफी है मेरे ख्याल से। हुहुहु।
तो भाई इतनी देर से क्रूज कर रहा था मैं। लॉल ऑनलाइन है, मेरे में ऑफलाइन दिख रहा है। कौन? भाई अभी तो मैं जा रहा हूँ, वैसे क्रूज कर रहा था मैं बहुत देर से। मजा आया भाई, अगर देखते थे क्रूजिंग मेरी तो भाई थोड़ा पीछे कर लियो स्ट्रीम। बाकी मैं जा रहा हूँ वैसे तो। एकदम मौसम मस्त हो रखा था ना यार, मैं एकदम मजा आ रहा था इससे क्रूज करने में। चल भाई तू खेल। बाकी थैंक यू फॉर जॉइनिंग द स्ट्रीम, ज्वाइन किया, जिन्होंने लाइक किया बहुत बहुत थैंक यू, इट मींस अ लॉट। बाकी मिलते हैं भाई कल की स्ट्रीम में, देखते हैं भाई कल क्या खेलेंगे। बाकी तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट, अच्छे से सोना और ध्यान रखना भाई अपना। बाय बाय।